So synthetic division, for example, the function is fx is equal to x square plus 13x plus 36, right? Now, if I say here, if the factor, now it says if the factor of equation is x plus 4. So उसने बता दिया कि the factor is x plus 4. तो इस केस में क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर फैक्टर बता दे तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -4. So simply, if I plug in the value of f(x) is equal to -4, so my answer should be equivalent to 0 if this is a factor. So I can just simply identify whether it's a factor or not. So मैं क्या करूँगा, instead of x, I'm going to simply replace it with -4. So -4 square is 16. 13 into -4 is equivalent to -52 plus 36. As you can see, if you sum up the values, you have plus 52 and this minus 52, the answer turns out to be 0. If your answer is equivalent to 0, then you will say yes, this is the factor of it. Otherwise, whatever is the answer other than 0, that will be your remainder. So for example, if I ask you, let's suppose next question कर लेते हैं. It says, what is the remainder when fx equals to x square plus 7x plus 10 is divided by x minus 4. So how are you going to solve this? You can simply say here x minus 4 is equal to 0. The value of x should be equivalent to a positive 4. Now, instead of x, you will simply substitute it with 4 and see what is your answer. So 4 square is 16, 7 fours is 28, and plus 10. So 16 plus 10 is 26, 26 plus 28, that is equivalent to कितना हो गया 54. So this is the remainder. So yeah, if the final answer is 0, that means that the given value is the factor. Otherwise, whatever is left is your remainder. Did you get this point? हाँ जी, जी सर। समझ आया तुमको? चलो, तो मैं कल की तरह Yeah, जो sir. जो कॉन्सेप्ट हम करते रहेंगे, साथ साथ उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे. So I'm going to sharing with you chapter number 17 and let's try to solve it. आप लोगों की तरफ वेदर कैसा चल रहा है सर? क्या सर? हाँ जी, वेदर कैसा है? सर्दी है, बहुत गर्मी है, बारिश हो रही है, क्या क्या चल रहा है? गर्मियाँ ही है, अराउंड 40 के आसपास। और ह्यूमिडिटी का क्या क्या होता है, कितनी है ह्यूमिडिटी, या ड्राई ह्यूमिडिटी वेदर रियाज रहता में तो थोड़ी सी होती है बस। ड्राई है रियाज बहुत। है? कराची में मसला ये है कि आप गर्मी भी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है. तो उस वजह से जो है ना, यहाँ की गर्मी बहुत गंदी वाली होती है. जी। अच्छा, so I have shared with you chapter number 17. So open your PDF and try to solve question number 5, question number 9, question number 10, question number 11,
Question number 13. Yeah, just try to solve these 5 questions. अच्छा, जैसे हो जाए तो आप मुझे चैट में बता देना, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हाँ जी, अयान, अंशी, Yeah, done, sir. done, nice. So let's discuss the answer first. Let me just mark down the answers. Just checking this out. So answer for question number 5 was 7. 9 is C. 10 is C. 11 is D. 13 is A. Now these are the 5 questions and the answers. Now let me know which one you were not able to solve, or were you able to solve all the 5 questions? सारे हो गए थे सर। और सारे सही हैं? जी। That's great then. Okay, ji. So let's move forward then. Acha, so the next part of it, if I need to divide 49 with let's suppose 3 कर लेते हैं, so इसकी डिवीजन कैसे होती है? सर 3 का कोई मल्टीपल जो इससे कम हो, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? Yeah, sir. नहीं आ रही? आ रही है, okay. So if we need to divide 3x square minus 8x minus 4 with 3x minus 2, so what is the procedure? So saying is, there is 3x and I need to multiply it with a specific number so that I get 3x square. So I will be multiplying this 3x with simple x. So 3x into x क्या हो गया? This is 3x square, and then minus 2 into x would be equivalent to minus 2x. You need to multiply all the terms with the same variable, that was x in this case.
उसके बाद you simply switch the sign as you need to eliminate them. 3x square get cancelled out. Minus 8x plus 2x gives you negative 6x. And then you can just simply take this minus 4 as a downward. Now you are left with minus 6x minus 4. And now you are having 3x. So I need to multiply 3x by what number? So I get minus 6x. That is simply minus 2, right? So if I multiply 3x with minus 2, I will end up with minus 6x. Then minus 2 with a negative 2 would be a positive 4. And then I need to switch the sign so that it gets eliminated. So plus minus 6x plus 6x gets cancelled out. Minus 4 and minus 4 is equal to minus 8. All right. Any confusion till now? No, Now sir. No, sir. this entire expression is written in the form a minus 8 over 3x minus 2. Now actually this is your question number 6 which I am solving right now. I'm actually solving the direct question. It's question number 6. So what is the value of a? So how I would simply represent a? So I know I can write this expression as 3x square minus 8x minus 4 as equivalent to 3x minus 2 uh, multiplied by x minus 2 and then again a minus 2, right? Oh, sorry, minus 8. This is how I can express this term, right? Now this is what I've shown over here, that 49 can be written as in the form of 3 into 16 plus 1 as a remainder. The same, this is your divisor, this is your quotient, and then minus your remainder. Minus 8 is your remainder. So, but this was written in this form. मुझे तो इस फॉर्म में लाना है ना, तो एक्चुअली इस फॉर्म में कैसे लेके आया मैं उसको? इस फॉर्म में लाने के लिए you just divided these terms with x minus 3x minus 8. सही है, सो आपने दोनों साइड्स को इस टर्म से डिवाइड कर दिया. नाउ ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द It's वैल्यू ऑफ ए? minus 2. एग्जैक्टली. सो दिस वाज योर ए ना, मतलब ये क्या है? मैंने सिर्फ उसको लिखने का तरीका, so this was a minus 8 over 3x minus 2 है ना. So a क्या है? So a is actually x minus 2 as an answer. That's it. So this is how you're going to simply represent your equation, जहाँ पे आपका जो quotient है वो आपके डिवाइडर से मल्टीप्लाई करके माइनस रिमाइंडर होता है या प्लस रिमाइंडर होता है, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, और उसके रिस्पेक्ट से आप उसे लिख सकते हो. ये कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे किया गया? जी सर. हाँ जी, ये क्लियर है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, ऐसा इसको कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन कहलाती है ये. So yeah, so the specific concept is known as long division. So now you are capable to solve question number 2 करो. Question number 3 है. तो हमने 6 ले लिया, तो 7 है. And so question number 8 as well. चलो जरा ये 2 3 7 8
हाँ जी, क्या अपडेट हो गए? तो क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ मैं। सर, हम्म। आप क्या वो बताओ। डिवीजन वाला हिस्सा दोबारा से बता सकते हैं? मतलब ये जो ये आपने डिवीजन कौन किया सा? था, कौन सा वाला? ये 3x - 2 3x स्क्वायर, ऐसा वाला समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल करा देता हूँ। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, रुको, मैं एक पीडीएफ ही शेयर करता हूँ आपको, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस तरह के। मुझे 1 मिनट दो, मैं आपकी पिक्चर। मैं एक पीडीएफ जनरेट कर रहा हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।
सर वो मेरा मतलब था कि वो मुझे वो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लॉन्ग डिवीजन वाला। हाँ हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। मैं उसके लिए पीडीएफ बना लिए, मैं आपको एक पूरी वो भेज रहा हूँ। सही। सही है, ताकि आपके पास पूरी क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकोगे उससे। तो ये हिंदी पीडीएफ आप तीनों को मैं शेयर कर देता हूँ। ये। हाँ, तो ये पीडीएफ मैंने जो शेयर किया ना, इसे खोल लो। सही है, थैंक यू। सो अब देखो इसमें ना, रेडी फंक्शन। सो मुझे ना, मैं आपको लॉन्ग टर्म डिवीजन समझा देता हूँ, बट ये वाले से डायरेक्टली भी हो सकते थे। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। सो क्वेश्चन नंबर सेज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30 is divided by, and there are like multiple options. अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ इसे ऑप्शन नंबर सी से, विच इज x माइनस 3, एंड आई नीड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। और मैं जो प्रोसीजर यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज लॉन्ग टर्म डिविजन। सो नाउ सी, आई हैव गॉट x over here and the first term is 2x cubed, so what I need to multiply it with? So x will be multiplied with this variable to get 2x cubed. So can you tell me what is the value of y should be? That is equivalent to 2x square, right? So मैं क्या करूँगा? I have to multiply it with 2x square. So x into 2x square turns out to be 2x cube. Minus 3 would multiply with plus 2x कितना हो गया? Minus 6x square. ठीक है यार? And then सही। I will simply shift the sign ताकि दोनों cancel out हो जाए. This is plus 3x minus 6x square. तो कितना हो गया? 9x square. Now minus 17x and minus 30 as it is copy हो गया downward. Now you have got x and you required 9x square, so you need to multiply it with positive 9x. ऐसा ही है? So x multiplied by 9x turns out to be a 9x square, minus 3 multiplied by plus 9x, that is minus 27x. Again, I need to switch the sign. X 9x square get cancelled out. Minus 17x plus 27x, you are left with 10x minus 30. Then again you need to multiply it. You have got x and you will need 10x. So you will be multiplying with a positive 10. तो कितना हो गया? 10x minus minus 3 into minus 10 is minus 30. Again sign switch करूंगा तो ये सब cancel out हो गया. So the remainder is 0. So you have got no remainder left. सही। समझ आया? So हम इस जी। तरह से खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है टू गेट अवर डिजायर्ड नंबर। उसके बाद हम इसको पूरे को सॉल्व करते चले जाते हैं। खैर, बट इसका सिंपल तरीका ये था कि यू नीड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन, व्हाट शुड आई हैव डन? आई शुड हैव सिंपली सेड कि भाई x minus 3 is equal to 0 and x is equal to 3. Now I would have simply plug in the value of x to be equivalent to 3 and see what is my answer. So 2 into 3 का cube plus 3 into 3 square minus 17 times what? 3 minus 30. So that depends upon the requirement of the question. What is the cube of 3? Is 27. What is the square of 3? That's 9. 17 times 3 is 51 minus 30. So yeah, 27 times 2 is 54 plus 27 minus 81. 54 plus 27 is a positive 81 with a negative 81. Everything gets cancelled out. The answer is 0. So
That is it. This is your remainder. So yeah, if the question just asks you to find out the remainder, so you won't be applying this long division method. You will simply substituting the value and find out what is the answer that is coming out. If the answer is zero, that means there is no remainder. If the answer is any value other than zero, the given value would be your remainder. Hmm. समझ आ गया? जी तो yeah, so बाकी लोगों के लिए भी अगर कभी कुछ समझ ना आया करे तो पूछ लिया करो. सही Anshi, थैंक यू is this topic clear till now? Yeah, sir. And what about Hassan? सब सही चल रहा है? जी सर. Okay, good. अच्छा, so क्वेश्चन नंबर 32378 पहले तो इसके आंसर से बता दो क्या है. The answer for question number 2 was B, 3 is 6, 7 is D, 8 is also D. So सबके यही आंसर्स आ रहे हैं. सर 8 का क्या था? अच्छा 8 डी. का D है डॉक्टर. जी सर ठीक है. Anshi, what about you? Anshi, are you also getting the same answer? Yeah. That's nice. So let's discuss the last concept. Let's try to solve question number 5. It says in the polynomial above k is a constant if z minus 1 is a factor of the polynomial above, what is the value of k?
Haji, what is the answer to question number 7 or question number 5? Sorry. फिर 7 है। Answer 7 है बिल्कुल सही है। हाँ जी, बाकियों का क्या हुआ? अयान, अंशी, Ayan, what about you, Ayan? What is the answer? Or 5? नहीं यार, 5 नहीं है लड़के। Oh, अंशी, your answer? Hello, Anshi, are you there? Yeah, sir. Even I got 5. Yeah. Even you got 5. Okay, let's see how to solve this. So the question says, कि there's इसका 2 तो आंसर z, 7 है. I thought. हाँ इसका आंसर 7 है। Oh, मुझे लगा. Plus 2x minus 2. Now it has told me that x minus 1 is the factor. That means if I substitute the value of, sorry, not x, z minus 1 is equal to 0. So if I substitute the value of z to be equivalent to 1, so I would end up with the answer to be equivalent to 0. So I can just simply substitute 1 at the places of z और यहाँ पे तो x ही रहेगा. So I can simply equate it as equivalent to 0 as it is your factor. So here the yoga 1. Now this is simply kx. This is 5x. This is 2x. And this is minus 2 is equal to 0. So minus 2 plus 2 gets cancelled out. Minus kx. And this is plus 7x is equivalent to 0. Shifting this on the right and the left hand side. So here हो गया kx. So xx कट गया. K is equivalent to 7. That's it. That is your answer. Because whenever the question is mentioned itself that this is the factor, so you can simply plug in that value and equate the entire equation equivalent to 0. सही है. उसके बाद आप सिंपली सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है वो आपके फाइनल आंसर होंगे. एनी कंफ्यूजन? No, sir. Great. So this is it. We have completed the entire. So I have shared an extra practice material for the topic of functions as well as for this synthetic division is known as remainder and factor theorem. Try to solve as many questions as possible. If you have any difficulty in solving any question, so we will discuss them on the class on Sunday. ठीक है? Yeah, sir. Yes. चलो. जी सर। Okay. Allah Hafiz. See you on Sunday. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.